All right. So this is now the first question from the essays in October November 25. So the question statement is that with the help of a diagram or diagrams, you need to explain the difference between the producer surplus and the consumer surplus, and then you have to basically consider whether whether producer will always gain when the price of a product increases due to higher cost of production. Okay, so whenever we are writing an answer, याद रखिए अपने जो क्वेश्चन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इस एंड से ये जो पहली स्टेटमेंट होगी, पहली ये होगी। सो मेजर केसेस के अंदर दिस वुड बी टेस्टिंग योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये जो एंड के बाद वाली 8 मार्क के क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती है, दिस स्टेटमेंट वुड मेजरली टेस्ट योर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, सो नॉलेज एंड अब थोड़ा सा मार्किंग स्कीम पहले देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम इसकी क्या होती है। सो यू हैव 3 marks फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, you have 3 marks for analysis, and you have 2 marks for evaluation. तो याद रखना कि एक कंक्लूजन हमारे आंसर में हमेशा होना चाहिए जिसके अंदर हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। अब सिंपल ये है कि वन बाय वन आंसर करते जाओ क्वेश्चन को। फिर एक चीज याद रखना कि वेदर मार्क्स आर रिजर्व फॉर अ डायग्राम और नॉट, वो डिपेंड ऑन कि क्या क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली डायग्राम मांगी हुई है या नहीं। तो एक और चीज अपने जेहन में हमेशा रखनी है कि जब उसने ये चीज कह दी है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो वी वुड नो दैट अ डायग्राम इज नाउ कंपल्सरी, और डायग्राम ना बनाने के ऊपर मार्क्स कटेंगे जरूर। ठीक है, तो सिंपल हमने सबसे पहले बेसिक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस की डायग्राम बना देनी है। फिर हमने उसको क्या करना है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स। व्हेन वी डिफाइन द की टर्म्स वी विल देन मूव ऑन टू एक्सप्लेनिंग के प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर सरप्लस क्या होते हैं। फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू हम उसको दिखाएंगे कि डायग्राम पे हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस हम किस तरह देखते हैं। एंड जब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे फिर हम बताएंगे कि सबसे पहले जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा। राइट, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से द सप्लाई शिफ्ट्स इनवर्ड्स। राइट, सो वी विल एक्सप्लेन के सप्लाई अंदर शिफ्ट होगी, हम उसकी भी डायग्राम बनाएंगे। फिर हमने एक्सप्लेन करना है कि किस किस पार्टी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, वो डिपेंड करेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हमने कंक्लूजन में डायरेक्टली आंसर क्या की चीज करनी है कि क्या प्रोड्यूसर ही हमेशा गेन करेगा जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी, या फिर क्या केसेस हो सकते हैं विच वेयर समथिंग अदरवाइज कैन हैपन एज वेल। तो let's read the format. Okay, so सबसे पहले what we're going to do is we will so paragraph 1 define the key terms जो कि होंगी consumer surplus and producer surplus. Once we're done with that, इसके बाद make a simple demand and supply diagram clearly marking consumer surplus and producer surplus. And then paragraph 2 would be explanation of the diagrams. ठीक है, तो इससे ये जो हमारा पहला नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस, ये कवर हो जाएगा। फिर हमने अपने सेकंड पोर्शन ऑफ द एसे पे जाना है। सो पैराग्राफ 3 के अंदर वी विल एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज हाउ प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट्स and how does it affect consumer surplus
एंड जब ये चीज हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस कम होगा या बढ़ेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो इलास्टिसिटीज पे करता है। तो पैराग्राफ 4 के अंदर we will explain how the extent of effect depends on PES and PED। जब हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, सो जो लास्ट हमारा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ 5, उसमें हम एक कंक्लूजन देंगे जिसके अंदर we will explain whether a rise in price due to higher costs will always lead to producer gaining or not। अब 8 मार्क का क्वेश्चन याद रखना क्या फॉलो करता है। एक 8 मार्क का क्वेश्चन जो होता है दैट फॉलोज अ पॉइंट बेस्ड मार्किंग स्कीम। क्या आपने एक एक पॉइंट जो है वो कवर किया तो यू गेट मार्क्स फॉर दैट। 12 नंबर का सवाल एक लेवल बेस्ड मार्किंग होती है, जहां पे जब एग्जामिनर सवाल पूरा पढ़ेगा तब जाके क्या करेगा, आपको लेवल्स के अंदर बैंड्स होंगे उसके अंदर पुट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही विल मार्क यू। तो उसके ऊपर हम थोड़ा बाद में आते हैं। सो लेट्स राइट एन आंसर फॉर दिस नाउ, ठीक है। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। सो कंज्यूमर सरप्लस रिप्रेजेंट क्या करता है? नेट बेनिफिट जो कंज्यूमर को गेन होता है व्हेन दे पार्टिसिपेट इन द मार्केट। इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है डिफरेंस बिटवीन कि प्रोड्यूसर्स कितना विलिंग थे टू सेल वर्सेस मार्केट के अंदर जब वो गए तो उनको एक्चुअली में कितना मिला। सो इट मेजर्स के नेट प्रोड्यूसर्स को कितना हुआ, ठीक है। सो लेट्स राइट द फर्स्ट पैराग्राफ है। सो कंज्यूमर सरप्लस is the difference between the maximum consumers are willing to pay for a good versus what they actually end up paying. This represents the net gain to the consumers from participating in the market. Producer surplus, on the other hand, represents the difference between the price producers receive versus the minimum that they were willing to supply it for. Therefore, it measures the net benefit to producer. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डायग्राम। सो डायग्राम के अंदर वी ऑल नो कि सिंपल डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम के अंदर हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। So what we're going to do is we'll make a supply curve, we'll make a demand curve, और यहाँ पे x एक्सिस पे क्वांटिटी और y एक्सिस पे हम प्राइस को लेबल कर देंगे। अब यहाँ से वील टेक आउट द इक्विलिब्रियम, और फॉर नाउ हमने सिंपल क्या करना है, हमने ये जो रीजन्स आएंगे ना to elaborate the diagram, so we call this QE as an equilibrium quantity and we call this price E। इस एरिया को हम A कहते हैं, इस एरिया को B कह देते हैं और इस एरिया को C कह देते हैं। तो रेलेवेंस जो है वो हमें बाद में पता चलेगी। सो जब हमने डायग्राम बना दी, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो द डायग्राम शोज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है? द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स टू पे, व्हिच रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स टू पे, राइट? While the supply curve shows the willingness of producers to supply the good at different prices.
The intersection of demand and supply determines the equilibrium price and quantity, which is quantity हमारी sorry price हमारी PE है and quantity हमारी QE है, which is respectively. ठीक है. So at the quantity QE, the total area under the demand curve, वो कितना है? Total area under the demand curve is A plus B plus C. ठीक है. Represents the total willingness of consumers to pay, whereas the total expenditure, which is price multiplied by quantity, is represented by the box B plus C. This leaves us the region A as the difference, which represents consumer surplus. On the other hand, the area under the supply curve, which is region C, represents the minimum suppliers are willing to supply at, and the total revenue is represented by the region B plus C. The difference triangle B represents the producer surplus. जब हमने ये चीज कर ली, now we have covered the first portion, so we have explained the diagram. याद रखना कि diagram without explanation has no merit in your answer. Now we move to the next part, which is कि हमने अब effect बताना है कि जब production cost बढ़ती है उससे हमारा consumer surplus और producer surplus कैसे affect होता है. So when production cost rises, the supply curve shifts to the left, leading to a higher equilibrium price and lower quantity. अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे पास चॉइस है. हमारे पास चॉइस ये है कि हम अपनी मर्जी से हम या तो एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, कि उसका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफेक्ट आएगा, और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो स्किप द डायग्राम, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हम यहाँ पे डायग्राम बना देंगे. ठीक है. सो डायग्राम हम किस तरह बनाएंगे? सो एक सिंपल वही डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम. सो क्वांटिटी, price. So this is the demand. This is the S1 before and जब cost of production बढ़ेगी, this is S2 which is after. ठीक है. उसकी वजह से हमारी जो equilibrium quantity है, so price P2 पे चली जाएगी. पहले it was at P1 and इसकी वजह से क्या होगा? So this is Q2 sorry Q1 and this is Q2. ठीक है. अब हायर प्राइस की वजह से हमारा कंज्यूमर सरप्लस तो ऑब्वियसली ये वाले रीजन से दिस इज द फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस. बट क्योंकि देखो क्वांटिटी भी कम हुई है, क्योंकि फ्यूअर यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम हुआ है. तो वील एक्सप्लेन. सो लोअर क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस हमने बता दिया. नाउ वील एक्सप्लेन. ठीक है. द राइज इन प्राइसेस will definitely reduce the consumer surplus because now consumers end up paying more, and
fewer units are consumed. ठीक है? Producer surplus will only increase if the quantity sold remains unchanged. However, since the price rises and quantity falls, although producers receive a high price, the total consumer surplus, total producer surplus falls. एंड कैसे वो पता चला वो देखो यहाँ पे, पहले क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड हायर थी, तो ये जो ऑरेंज रीजन है, ये जो ऑरेंज शेडेड ट्रायंगल है, दिस वाज द प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर. ठीक है? एंड अब लेट्स से कि ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, ये वाली ट्रायंगल, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर. सो यू कैन सी कि देयर इज अ फॉल इन द रीजन. और ये फॉल प्राइमरली क्यों है कि इवन दो प्राइसेस बढ़ी हैं, क्वांटिटी सोल्ड भी कम हो गई है, राइट? सो एज अ रिजल्ट, total producer surplus may not always increase, and this and whether it will increase or decrease will depend on elasticities. अब अगले पैराग्राफ में हमने सिंपल बताना है कि इलास्टिसिटीज पे किस तरह डिपेंड करता है. ठीक है? तो ये हम किस तरह बताएंगे, हम इसका, सो द एक्सटेंट टू, so if demand is inelastic, consumers are less responsive to price changes, meaning that producers can still pass on higher costs to consumers in form of high prices. Therefore, if demand is inelastic, producer surplus is more likely to increase. However, if demand is elastic, ठीक है, a price increase causes a large fall in quantity demanded, thus increasing, क्या कहते हैं, thus decreasing the total consumer surplus. Similarly, if supply is elastic, producers may not be able to absorb the price increase, which can worsen the producer surplus. तो elasticities के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है हमने बता दिया. Lastly, we give a conclusion. Therefore, in conclusion, a price increase due to a higher production cost will not always lead to producers gaining. ठीक है? The overall effect would depend on elasticities, and therefore whether supplier benefits or loses also depends on the elasticities of demand and supply. तो ये जब हमने कर लिया, now this is a complete answer for this 8-mark question, right? So we explain what consumer surplus is, diagrammatically show कर दिया, effect बता दिया कि जब price बढ़ती है ये होता है. ठीक है? Now let's look at the marking scheme for this question, okay? So कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं और मार्किंग स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट है, लेट्स नाउ लुक एट दैट. ठीक है? सो मार्किंग स्कीम देख लो, क्योंकि मैंने बताया था ये पॉइंट बेस्ड मार्किंग स्कीम होती है, तो हर पॉइंट जो मार्किंग स्कीम के साथ मैच कर रहा होगा उसका हमें 1 मार्क मिलेगा. सो फॉर अ फुली एक्यूरेटली ड्रॉन डायग्राम क्लियरली शोज द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस
उसका एक नंबर है, सही है। सो ये जो डायग्राम हमने ऊपर बताई उसको बनाने का एक नंबर था। एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किस तरह रिप्रेजेंटेड है और प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरह रिप्रेजेंटेड है, उसका एक नंबर है। और प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन के एक मार्क तक। तो ये हमने तीनों चीजें कर ली। उसके बाद एनालिसिस इज कि सबसे पहले द डायग्राम शोइंग द इफेक्ट ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द प्रोडक्ट, सो सप्लाई शिफ्ट वाले डायग्राम का एक मार्क था। एंड एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटीज इन के एक एक नंबर रिजर्व था। और इम्पैक्ट में डिपेंड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी एक मार्क था। ठीक है। Then evaluation का कि the extent to which producers will always gain would depend on the value of PED, इस स्टेटमेंट को लिखने का एक नंबर था। एंड द वैल्यू ऑफ पीईएस लीडिंग टू अ रीजन कंक्लूजन, एक जजमेंट हमने जब बता दी उसका एक मार्क था। सो वी हैव डन एवरीथिंग राइट। सो ये बेसिकली एक 8 नंबर के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। एंड दिस इज हाउ यू वर सपोज टू राइट एन आंसर फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।